Hey all the cat aspirants, welcome on board to Icon Says Cat channel. इस वीडियो में we are going to discuss about such two questions which actually appeared in the cat for the first time. अभी तक के इतिहास में कैट में कभी भी इस पैटर्न पर क्वेश्चंस नहीं आए. 20 साल तो स्टूडेंट्स मुझे हो चुके हैं पढ़ाते हुए and not even a single time we have seen this pattern of questions. For the first time there was a change in the verbal ability section and a new pattern was introduced. And what is the change? And those two questions we are going to discuss in today's video. वो दोनों questions भी students अपन discuss करेंगे slot 1 के and later on दूसरे videos में हम लोग slot 2 and slot 3 को भी cover करेंगे. So stay tuned with us and keep sharing these videos with your friends as well. Okay, ये तो करना ही है यार. और like सबसे पहले like करो, सबसे पहले गुरु दक्षिणा दो और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करो. Okay. So students, we are going to discuss the change. See, now try to understand what is this change all about. Para completion. वैसे तो students अभी तक क्या होता था, a paragraph was given to us and one blank was there in between the paragraph. And among the 4 sentences, we were supposed to decide कि उस blank में कौन सा sentence fit होगा. So this was the common pattern and for the last many years, such questions were very commonly asked in the CAT. But now this time the pattern was reversed. This time students actually one sentence is given to us and in the paragraph there were 4 blanks. I repeat, one sentence was given to us and in the paragraph there were 4 blanks. हमें ये डिसाइड करना था कि वो जो सेंटेंस है इन चारों ब्लैंक्स में से वो कहाँ फिट होता है. पॉइंट समझ में आया? एक सेंटेंस है और एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ के अंदर 4 ब्लैंक्स और हमें ये डिसाइड करना था कि वो जो सेंटेंस है वो इन चारों ब्लैंक्स में से कहाँ लॉजिकली फिट होता है. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, टू गेट द करेक्ट आंसर्स हियर व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स. हमें उस पूरे पैराग्राफ का सेंस समझ में आना चाहिए, हमें थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए. एंड ये दोनों क्वेश्चंस आई विल नॉट कॉल देम वेरी टफ. एक स्टूडेंट जो ठीक ठाक समझदार है इंग्लिश में, जिसकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक है, आई थिंक ही कैन मैनेज टू गेट द करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट्स, वो दोनों क्वेश्चंस we are going to discuss now and I want all the students सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो, अच्छी तरह से इस पैटर्न को समझो. See what the pattern is all about. A sentence is given to us and this becomes the paragraph. And इस paragraph में students you see there are 4 blanks given to us and we people have to decide this particular sentence will fit in which particular blank. Okay. इस पैटर्न को स्टूडेंट सबसे पहले मैं डिस्कस करूं उसके पहले आई वांट यू पीपल टू पॉज इट, थिंक द आंसर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑन योर ओन. ओके, सो आई थिंक यू पीपल हैव डन इट एंड नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए. आई थिंक स्टूडेंट्स इसमें बेस्ट तरीका, एंड दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, द बेस्ट थिंग हैपन्स टू बी सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ो. सेंटेंस पढ़ने के बाद यू हैव टू जस्ट रीड द पैराग्राफ वंस. एक बार आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, आपको एक्चुअली पूरा थीम समझ में आ जाएगा. एंड देन स्टूडेंट्स मोर और लेस वैसे ही पता चल जाएगा कि 4 में से कौन से 2 ब्लैंक्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सेंटेंस शायद फिट नहीं होगा. मैक्सिमम अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करेगी तो वो 2 ब्लैंक्स. अब उन दोनों में से अगर अपन थोड़ा सा डीपली कंपेयर करेंगे, सोचेंगे, तो वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर. नाउ सी, easing the anxiety and pressure of having a big day is part of the appeal for many couples who marry in secret. So this sentence talks about such couples who actually want to marry secretly, and the reason is also given to us. See students, by this we come to know that the paragraph talks about possibly the reasons of secret marriages. So now we people have to read this paragraph and understand that this particular sentence fits in which particular blank. So the best thing is you people have to read the paragraph once so that you actually come to know what is the context and where the sentence can be fit. So wedding season is upon us and after 2 years of COVID chaos. Students, do you know what is the meaning of chaos? Wherever you come across a new word, please ensure that you underline that, you note the meaning of that. पढ़ते हुए स्टूडेंट जो vocab डेवलप होती है वो सबसे बेस्ट होता है. सो chaos का मतलब होता है अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट, डिस्टर्बेंस, कहीं पर उथल पुथल मच जाती है, अफरा तफरी होती है. सो दैट इज नोन एज chaotic कंडीशंस.
तो chaos का मतलब हो गया disturbance. So students, wedding season is upon us, and after 2 years of COVID chaos, that saw nuptials scaled back. Now, what is the meaning of nuptials? Nuptials का मतलब होता है marriages. So nuptial basically stands for marriages. So nuptial scaled back. You may think the temptation would be to go all out. So students, the first sentence is, because after 2 years, now the situation is normal. So possibly the author says that you may think like, now people may be having the temptation to go out all. That means हो सकता है लोग अब वापस से बड़ी बड़ी शादियां करना चाहें, हज़ारों लोगों को बुलाना चाहेंगे, तो जैसे पहले बड़ी शादियां होती थी उसी तरह से. लेकिन अब स्टूडेंट्स आप देखो, फर्स्ट ब्लैंक इज गिवन हियर एंड बट इज देयर. ये जो कंजंक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, बट, यट, बिकॉज, देयरफॉर, हाउएवर, these play the most important role in identifying the correct answers here. Whenever you solve the questions of fill in the blanks, whenever you solve the questions of jumbled paragraphs or such questions also, always focus on conjunctions. Now see, when we talk about but अपन कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? But actually opposite tones को connect करता है. जैसे for example, I was not well, but I cleared my exams. So but हमेशा पॉजिटिव टोन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता है. नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. द ऑथर सेज दैट यू मे थिंक द टेम्पटेशन वुड बी टू गो आउट ऑल आउट, बट इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग द गेस्ट लिस्ट, मेनी कपल्स आर ऑप्टिंग टू हैव एंटायरली सीक्रेट सेरेमनीज. नाउ सी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज, शायद आप लोग सोचोगे कि वापस से लोग बड़ी शादियों की तरफ जाएंगे, बट ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं who actually don't want to expand the guest list and they want to keep their marriages a very secret affair. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स वहाँ पर but को यूज़ करना बिल्कुल सही है. And when these two sentences they are able to gel with each other, so I think यहाँ पर first blank में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so students, in this manner we have to decide. चलो आगे बढ़ते हैं. With COVID case numbers remaining high and the cost of living crisis meaning that many couples are feeling the pinch, it is no wonder that some are less than eager to send out invites. Now see, the possible reasons are given to us. One reason happens to be the COVID cases are still high, and second, the cost of living crisis. Although many of the couples, because of their decrease in the income, okay, and because of COVID pandemic, सभी की हालतें थोड़ी सी टाइट हो गई, एंड पॉसिबली बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे कपल्स अपनी इनवाइट्स को बहुत लिमिटेड रखना चाहते हैं, इनवाइटीज़ को बहुत लिमिटेड रखना चाहते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस टॉक्स अबाउट द पॉसिबल रीजन व्हाई मेनी कपल्स वांट टू हैव सीक्रेट मैरिजेस. ओके, नाउ लेट अस रीड. प्लस, नाउ सी स्टूडेंट्स, सेकंड ब्लैंक इज गिवन टू अस. प्लस, इट कांट हर्ट दैट in celebrity circles getting married in secret is all the rage. Now see students, what is the meaning of all the rage? This is actually a phrase. Now rage, we do understand what is the meaning of rage. Rage का मतलब गुस्सा होता है, but when I say all the rage, इसका मतलब गुस्सा नहीं होता. All the rage basically stands for something which is in fashion, something which is very common, which is going on, which is prevalent. तो कोई चीज़ जो चल रही है, फैशन में है, विच इज़ कॉमन, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ऑल द रेज. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. प्लस सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम डिस्कसिंग द पॉसिबल रीजंस व्हाई द कपल्स वांट टू गो फॉर सीक्रेट मैरिजेस. अब बीच में स्टूडेंट्स सेकंड ब्लैंक है, लेट मी सी कि ये सेंटेंस यहाँ फिट होगा क्या, बट इसके बाद वापस से प्लस है, मतलब मैं उन्हीं रीजंस को और आगे बढ़ा रहा हूँ. सो प्लस, it can't hurt that in celebrity circles getting married in secret is all the rage. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़, यू माइट हैव सीन सो मेनी सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दे ऑफन गो फॉर सीक्रेट मैरिजेस. बाद में दुनिया को पता चलता है कि इनकी शादी हो गई. सो एनीवे, सेलिब्रिटीज़ में सीक्रेट मैरिजेस बड़े कॉमन हैं. सो दीज कपल्स, इवन इफ दे गो फॉर सीक्रेट मैरिजेस, दिस एक्चुअली मेक्स देम कंफर्टेबल. The celebrities में secret marriages are quite common, and this fact actually makes these couples comfortable कि जब celebrities कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. So students understand, क्या इन दोनों के बीच में इस sentence को fit करना बिल्कुल ठीक होगा. Now you people try to see, easing the anxiety and pressure of having a big day.
is part of the appeal for many couples who marry in secret. This particular sentence also gives a possible reason why these couples want to go for secret marriages. तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग रीजंस डिस्कस कर रहे हैं. इवन दिस टॉक्स अबाउट द रीज़न. तो अगर इस सेंटेंस को मैं सेकेंड में फिट करता हूँ और उसके बाद अगर प्लस आता है तो आई थिंक ईच एंड एवरी सेंटेंस इट मेक्स अ सेंस. ओके, तो वी आर डिस्कसिंग द पॉसिबल रीजंस. एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक सेकेंड ऑप्शन में ये सेंटेंस बिल्कुल फिट होता है. बट एनी वे, बिफोर आई जंप टू द फाइनल कंक्लूजन, let me read the later part of this paragraph as well. Now see students, after this the third blank is given to us. I would definitely say that secret weddings are becoming more common, says Landis Bejar, the founder of a therapy practice which specializes in helping brides and grooms manage wedding stress. Now see students, from here the sentence of this particular person is starting. So we are not discussing the reasons now. So I think third blank में इस sentence को लेना will not be very much good, because अगर मैं second blank में इसको लेता हूँ और उसके बाद अगर plus लेता हूँ तो ये चीज़ें students आपस में ज़्यादा better connect होगी. So third blank में this sentence will not come. And let me see the next part. People are looking for ways to get out of the spotlight and avoid the pomp and circumstance of weddings. Okay, and the fourth point is coming. They just want to get to the part where they are married. So students, again, if I see the tone of the sentence which is given to us, that is more of discussing the possible reason. Whereas students, when I talk about the fourth one, और वैसे भी students आप देखो, people are looking for ways to get out of the spotlight and avoid the pomp and circumstance of weddings. They just want. तो ये particular sentence उस ending से बिल्कुल मैच होता है. तो बीच में वापस से किसी सेंटेंस को लेना will not be advisable. So here students, the best answer happens to be second option. तो जैसे आप इस सेंटेंस को सेकेंड में रखोगे, the whole paragraph will become meaningful. So this is how we people have to decide. और ये जो पूरा पैटर्न है स्टूडेंट्स, it is not so tough. We people can manage it very easily. The only point happens to be जिस स्टूडेंट की थोड़ी सी हैबिट है रीडिंग करने की. अगर आप रीडिंग करते हो स्टूडेंट्स तो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना, डॉट्स को कनेक्ट करना will become easy for us. And the moment you apply that much of logic, you will be able to give the correct answer. And students, when I talk about the big marriages, India is a land of big marriages. कितनी बड़ी बड़ी शादियाँ होती है. And I generally see in the society, what is the talk of the town? People keep discussing about क्या रोज शादी में हम लोग गए थे और वहाँ पर 1000 रुपीज़ की तो थाली थी, 25 लाख का टेंट था, 1.5 करोड़ उस आदमी ने अपने बेटे की शादी में खर्च किए. तो यू सी दैट द सोसाइटी इज़ डिस्कसिंग मोर ऑफ दीज पॉइंट्स. आई थिंक उससे बेटर हम इनोवेटिव आइडियाज़ पर बात करें, हम बिजनेस आइडियाज़ पर बात करें. वैसे ठीक है, इंडिया में बड़ी शादियां भी बहुत बड़ा बिजनेस तो दे ही देती है. ओके, चलो एनीवे, ये इंडिया का कल्चर है. पर शादियों में मज़ा बहुत आता है, सारे रिश्तेदार मिलते हैं, खूब मस्ती होती है और खूब सारे आइटम्स खाने पीने को मिल ही जाते हैं. चलो एनीवे स्टूडेंट्स, तो यू पीपल हैव गॉट द करेक्ट आंसर हियर, सेकंड ऑप्शन. एंड नाउ वी पीपल आर गोइंग टू कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, I want all the students फिर से pause करो and go through the second question properly, and this time also try to get the right answer. चलो start करें students. So having made citizens more and less knowledgeable than their predecessors, the internet has proved to be both a blessing and a curse. What a powerful statement it is. The statement says that internet is a blessing also and a curse also. So finally, why the statement has been made, और ये statement इस पूरे पैराग्राफ में कहाँ फिट होता है, that is something which we have to decide. And predecessors का मतलब क्या होता है students? This becomes the opposite of successors. Successor मतलब next generation, predecessor का मतलब पहले वाली generation. Okay? अब students, to get the correct answer, it is advisable that कि हम इस पैराग्राफ को as it is एक बार पढ़ लें. Okay? So never before has a population, nearly all of whom has enjoyed at least a secondary school education, been exposed to so much information, whether in newspapers and magazines or through YouTube, Google and Facebook. So the very first line talks about कि आज की जनरेशन के पास जितनी information है, इतना स्टूडेंट्स आज तक कभी नहीं हुआ. That is the reason we call this period as information era, isn't it? Now coming on, yet it is not clear
It is not clear that people today are more knowledgeable than their barely literate predecessors. Now see students, you people have to see whether this particular sentence gets connected with this sentence or not. इन दोनों sentences के बीच में एक blank आता है first. We need to see that ये दोनों sentences आपस में connect होते हैं कि नहीं होते हैं. अगर ये connect नहीं होते हैं तो इस sentence का वहाँ पर आने के chances बढ़ जाएंगे. But मुझे लगता है students, when I see the tones of these two sentences, ये दोनों sentences absolutely connect होते हैं. And ये जो conjunction है yet, इस conjunction को यहाँ पर use करना बिल्कुल बिल्कुल सही है. Why is it so? Understand. The first sentence is positive. It talks about that today's generation has so much of information, yet it is not clear that people today are more knowledgeable. मतलब इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी आज का आदमी ज़्यादा knowledgeable है ऐसा नहीं लगता. It is not clear. The students try to understand, yet again the same thing. It connects to opposite tones. So the first sentence is positive. We have so much of information. The second is negative. Yet, do we have the knowledge or not? It is not clear. Okay. So first option anyway is not the correct answer. Yet बिल्कुल set होता है इस first sentence के साथ. Contemporary advances in technology offered more serious and inquisitive students access to reams of knowledge previously unimaginable and unavailable. Contemporary advances. तो students समय समय पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते गए, बिकॉज ऑफ दैट ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव अ रेडी एक्सेस टू नॉलेज. आज किसी भी चीज़ पर जानकारी चाहिए तो एवरीथिंग इज रेडी. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट. चैट जीपीटी, इट इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन नाउ एंड मेनी मोर सच थिंग्स आर गोइंग टू कम नाउ. तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस ये कहता है कि नाउअडेज स्टूडेंट्स दे हैव रेडी एक्सेस टू नॉलेज. But such readily available knowledge leads many more students away from serious study. But now you people try to understand. मुझे लगता है इस particular sentence में I am talking about ready availability of knowledge and access to knowledge. और यहाँ पर मैं लगाता हूँ but, and I say that, but such readily available knowledge. तो I personally believe that इस second blank में students कुछ भी नहीं आना चाहिए. ये दोनों sentences आपस में perfectly gel होते हैं. There is no problem at all. But such readily available knowledge leads many more students away from serious study, the reading of actual text, and towards an inability to write effectively and grammatically. So students ready access of knowledge is there, but still उसके disadvantages बहुत हैं. And because of this ready availability of knowledge, students they have become lazy now. They don't read the text and they don't practice writing. So students but यहाँ पर use करना बिल्कुल perfect है. Again I repeat, conjunctions are the key. पूरा ध्यान दो conjunctions पर. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. थर्ड पॉइंट यहाँ पर, थर्ड ब्लैंक. It has let people choose sources that reinforce their opinions rather than encouraging them to question inherited beliefs. Now this particular sentence is different. अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो सेंटेंस है वो थर्ड में फिट होगा कि फोर्थ में फिट होगा. अब स्टूडेंट्स थर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? दिस पर्टिकुलर सेंटेंस टॉक्स अबाउट, नाउ बिकॉज ऑफ दिस रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज, व्हाट इज हैपनिंग इज हम लोग वही कंटेंट और वही नॉलेज ज़्यादा एक्सेस करते हैं जो हमारे ओपिनियन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है. सो नाउ वी पीपल आर नॉट क्वेश्चनिंग एक्चुअली. नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपन्स टू बी वॉट एवर आवर बिलीफ इज, वी पीपल आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन दैट बिलीफ. We people are trying to reinforce that belief, and we are not questioning our inherited beliefs. Inherited का मतलब होता है जो belief हमें past में मिला है, हम उसे question ही नहीं करते हैं और हम उसी belief को और ज़्यादा strengthen करने के लिए we keep accessing the knowledge and all. So this particular sentence is also talking about the negative aspect of readily availability of knowledge. So अब students मुझे decide करना है कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विल इट कम हियर और विल इट कम हियर. तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ? चलो एक बार इस सेंटेंस को वापस पढ़ते हैं. हैविंग मेड सिटीजन्स मोर एंड लेस नॉलेजेबल दैन देयर प्रेडिसेसर्स, द इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, अगर मैं थर्ड में इसको लेता हूँ तो दैट बिकम्स अ मिसमैच. व्हाई इट बिकम्स अ मिसमैच? बिकॉज in all these sentences I am talking about the disadvantages of having readily availability of knowledge.
सो स्टूडेंट्स, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि जितना ज्ञान हमको मिल रहा है, जितना एक्सेस मिल रहा है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सो व्हेन आई एम डिस्कसिंग ऑल द डिसएडवांटेजेस, बीच में इस सेंटेंस को फिट करना विल बी वेरी रॉन्ग. ऐसा नहीं लगता स्टूडेंट्स कि ये जो सेंटेंस है, इट इज़ मोर ऑफ अ कंक्लूजन काइंड ऑफ थिंग. आई मीन टू से दैट इंटरनेट कैन बी अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, उन सब के रीजंस इस पैराग्राफ में दे रखे हैं. सो स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर हियर विल बी फोर्थ ऑप्शन. Fourth option is the right answer because this particular sentence is basically conclusion of this paragraph. Okay, so try to understand the tone of the sentence. Sentence पढ़ते ही हमको समझ में आना चाहिए कि सर ये जो sentence है, it is more of talking about the conclusion, and when it is talking about the conclusion, yes, the best point happens to be fourth option. So I think students, you people agree with this? Wonderful. सो दिस वॉज द न्यू पैटर्न. और ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आप समझ लो. एंड अगर अपन वापस से इसको करना चाहें, वीडियो के पीछे जाओ, वापस से स्टूडेंट्स पॉज करो एंड डू इट. बट जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाए, तब तक स्टूडेंट डोंट लेट द क्वेश्चंस गो. आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सबके साथ क्या होती है पता है? हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करते समय, ठीक है, एम्बिग्विटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, थोड़ा बहुत समझ में आया और हमने आंसर मार्क कर दिया. एंड स्टूडेंट जैसे ही पता चलता अच्छा फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, वी मूव अहेड. until and unless you are convinced with the logic, until and unless you are convinced with yourself why this answer is there, students don't move on. अगर ये आदत अपन अभी से डेवलप करेंगे तो स्टूडेंट जो एक्यूरेसी डेवलप होगी वो बहुत अच्छी होगी. सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करने के लिए अपनी रीडिंग स्किल्स को ज़रूर बढ़ाओ. अगर रीडिंग बहुत अच्छी है तो 100% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह से अपन हैंडल कर पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आइकन्स एस कैट फैमिली. थैंक यू.